going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. Council, that's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Council. if I may take just, if I may take, I'm sorry. answer the question. Please. Learned Council, so on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if your Lordship would say. आप मफरूजों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केसेस लगाने ही नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए, आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सके, कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूजे पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नजरअंदाज करना चाहता हूं, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम, आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया, सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है, तो मफरूजों पे ना चलिए। आप सिर्फ बताइए, एजाज साहब बार बार आपसे 2 बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो जरा आप भी आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार वही जवाब है, it has to follow the law and the constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ejaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, entry 55 and 58. So, direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through 2 ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So, the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal aapse पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, what's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if your Lordship would read 142 read with 191, so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. There is also a power to the Parliament to make law under 191. Relating to what? To the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is, so practice and procedure is not enlargement of the power. 191 को एक दफा पढ़ लें. जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है. Rules of procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are 3 different sources which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, if we were to read it 58, then again Parliament gets the
competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 रेड विद 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूं. अगेन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मिस्टर हसन यहीं पे इसको सप्लीमेंट कर Sir. लीजिए क्वेश्चन को. Whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. जी ये आपने एक जजमेंट में द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड व्हाट डज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ मीन. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. और जो subject to law and constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई restriction Supreme Court के कोई restriction Constitution में या कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ में ना हो तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा. इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन एन एग्जिस्टिंग लॉ, उसके कॉन्ट्ररी सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बनाएगा. लेकिन रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा. और इन इसको रिस्ट्रिक्शन existing law or existing law they're defined है 267. सर इसमें existing law में अगर restriction नहीं है, constitution में restriction नहीं है, then the exclusive power to make administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, it does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I am grateful for raising this question. In fact, I have made a list. चले बढ़िए आगे. Malot, if I may submit. नहीं सबमिट करें, घड़ी को भी देखिए. अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, देन वी मे नॉट बी एबल टू रीच एनी कंक्लूजन. इफ वी हैव टू रीड एज अ होल, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस किया. अच्छा पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं एग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज हो गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ करता हूं, और जब तक आप एतराफ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया, कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें. तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा. आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं. फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे. आइन को एक तरफ रख दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है. फिर मूड हुआ कि जी 200 केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है. फिर जिलानी केस में नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया. मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुनियादी सवाल तो ये उठता है, आप क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी, क्योंकि आइन के बरक्स या कहिए, हिम्मत कीजिए और कहिए नहीं बिल्कुल, या आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें.
क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप आखिरी बात कर रहे हैं। सर, मैं ना तो कह रहा हूं आप कि ना पहली किश्ती में जाना चाहते हैं, ना दूसरी किश्ती में जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कर दूं जो मुझे जेब नहीं देती, क्योंकि मैंने ऐसा हल्फ उठाया नहीं है। सर, आपने हल्फ उठाया है प्रिजर्व का इंग्लिश का कॉमन मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं और आप स्टारे डिसाइसिस में नहीं आपसे जाते, पूछ रहा हूं, तो आप ही राय फिर दीजिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकते। प्रिजर्व मीन्स यू हैव टू प्रिजर्व इट, डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड अगेंस्ट एन अटैक। और कितना वक्त आप ले रहे हैं अभी, आप बताएं। सर, अब मैं क्वेश्चन मेरे मेन Learned Counsel coming back to, सर, अगर आप माइंड वो बहुत सारे उनके क्वेश्चन Learned Counsel coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question. ये जो interpretation है 191 की, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in the law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर। जो 191 की पावर्स हैं, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। द क्वेश्चन ऑल्सो अराइज, कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेकिंग पावर कैन बी स्टल्टिफाइड बाय अ सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन? दे कैन नॉट बी, बिकॉज व्हाटएवर हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन थ्रू एन इंटरनल मैकेनिज्म। आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, नहीं दलाइल दीजिए ना। मैं अगली बात प्लीज सर, एक मैं सिर्फ बात करूं, जो जवाब जो था वो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा एज फार एज आई एम कंसर्न, इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल, तो फिर करने तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे। मैं आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए फिर। आप मेरी बात को सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माई लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर, इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद हम होता, आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आइन सर, जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते, विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको ये पता ही नहीं था। सर, द क्वेश्चन इज दिस, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि सब्जेक्ट टू का क्या मतलब है? इज दैट एन इनेबलिंग पावर? डज इट गिव कॉम्पिटेंस और इज दैट अ लिमिटेशन? Does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. Relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular... देखिए हसन साहब, आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं ताकि आप सब्जेक्ट टू का मीनिंग बता देना जी। हाउ शुड वी रीड? सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं, है या नहीं? जवाब दीजिए।
कोई भी नहीं है। हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। एक मिनट, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहे तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीजें आई हैं। मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है, उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन दी प्रेमिस ऑफ दैट लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर, अब क्वेश्चन एक अराइज ये होता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन और इनलार्जमेंट का इशू नहीं है ये। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू हर जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything contained in the Constitution. non-abstenting clause. तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बना है? नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है? राइट ऑफ अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means if there is a restriction in the constitution, Absolutely. you cannot go beyond that. It's not इसी beyond तरह that. subject to law means It's correct. unless restricted by law. But कौन सा law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन नहीं है सारी कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज द प्रिसाइज क्वेश्चन योर लॉर्डशिप। नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे प्रिसाइज क्वेश्चन वो कह रहे हैं, अपना तो आपका जवाब ही कोई नहीं। जवाब तो whoever says whatever to you, you agree with that. अच्छा नहीं, आप देखें, सवाल आपसे ये है जो I'm just adding to what Justice Ijaz has just said. 191 की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन का सवाल है हमारे सामने। एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, that's what we want you to assist us with, you see. Whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure. And once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling law बना सकते हैं? वरना उस लॉ का क्या मतलब है 50 आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ का। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं। सर, अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके, चले, ठीक है, आपका जवाब आ गया। अगर जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर। मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 191 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट make a law in exercise of Article 191, repealing the Supreme Court rules 19. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं? अब अगर सर उसमें इबाम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। छोड़ दीजिए, नहीं है, आप बैठिए, हम कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ I have some questions for you, so stick around at this rostrum. Now you say that
the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is section 2 of the Act. In section 8, they have provided an overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, and there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it, how will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, so your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the... Now, if I may, in light of this very interesting debate or discussion that has been going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे। है आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का नहीं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी। जब मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting. And my question to you is whether the language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule-making power is with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177 before them. They could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power,
allows for the conflict to Because dissipate. the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The parliament cannot. That is the answer. See, in Baz Mohammed Kakar, this court has very उसमें यही बिल्कुल है। specifically held that because these rules have been framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakar's citations on that basis. Yes, Mr. Hassan, I believe it will be last. अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर रेफर लीजिए कर देता हूं खत्म कि- हाँ सर अमीनुद्दीन साहब The का क्वेश्चन question is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no, if the law would Then- have existed. then Because the this is an exercise which has been The done. rules So are perhaps subject- one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional No, framework or no, not. the That's a very question- important the- question the which we second are part is missing out. Because that here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely not. So the same, so the enabling aspect of it, the The problem fundamental point that... I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Leonard Council. You say yes, no, Leonard Council. which we really appreciate. Leonard Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, Leonard if you want to say something more. Leonard Your Council. Lordship would allow me, I have submitted, I am Leonard still Council. answering the question, my Lord. Leonard What Council. can I do? I like your brevity. Leonard Council. This is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully I think submit, this in is- fact, I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question, again you're doing this. I would respectfully say, This is not, answer the this is question. not an unelected court, because भाई this आप is a जवाब दे court देना, कहीं दुनिया में which is- होता है। which is दुनिया created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल। जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है, रूल्स जो है, दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए फिर आप दे दीजिएगा जब आप जी। दे दें। मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट, हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बताते हुए, क्या आपके कहने का मतलब जो मैं समझाऊं
आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन ओके, इफ नॉट बता दें क्या ऐसा? Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also. And this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. Opening words है, the rules must be subject to law and the constitution. Constitution and the law. But who will make रूल्स ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉ. मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट देखिए, आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है. उधर ही है सर. आप सुनने तो लेना. वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है. मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है, वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं. वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें, और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे. सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस. सर मैंने तो लॉ से हम किया हुआ है. हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें. मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को. अगर तो नहीं, फिर अगर नहीं है तो फिर वक्त जाहिर ना करें, किसी और को मौका दे देना. मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना. फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे और बता देता हूँ सर. जल्दी कर लें प्लीज. सर दिस लॉ affects. Oh, brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance between the three pillars. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, trichotomy of powers की. Sir, नहीं, मैं it's a different point है. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away, because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You are just waffling. You are not articulating any contention. This is what. So what I am saying. It is obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर मीनिंग है ना. अगर आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते. है ना, कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है. एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी. इस कानून में 2 चीजें हैं. नाम तो उसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील. वो ये 2 चीजें अलग अलग हैं. इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है. उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए. हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए ना. अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे. जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, अगर आप जवाब दें. एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल. Matters which under the Constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the Federation. नहीं 55 sorry. 55 जी, 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list
and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental power. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? इनलार्जमेंट है या ये सब वो है, रिट्रैक्शन है? और खास तौर पे जो टू द एक्सटेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, आप देख। सवाल तो ये है ना कि इसमें ये देखिए मासून हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, सर ये और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? Sir, this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So, it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize स्पेशली करेगा तो वो चीज आएगी। तो by हो गया ना, under. Say nothing, say something. What does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship would deduce through an interpretation. It's are they interchangeable terms? Included in that. It Because doesn't. by the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the But word. आप जवाब तो देना पहले सवाल। सर उसका देखिए आपसे पूछा है ना, बाय और अंडर, अंडर क्या, अंडर बाय द पार्लियामेंट है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मानी, कोई रेफरेंस देना। under the Constitution which is provided, and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, would you're not. be a power to make Hassan sir, you're not adding anything Sir, useful. मैं बस conclude फिर आप इसे conclude ही एक कर चीज रहे हैं। सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So In the anything which Constitution. maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or Can you cite an example? Learned Council. Cite an example. Learned Council. ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की रेमेडी है? sorry, किस पावर और jurisdiction की रेमेडी है? दी अपील 184(3) की है। जी That power already exists सर and it's only a continuation of the same power. सर 185 के अंदर 184 की अपील does not exist with utmost respect. Learned Council जो my lord ने सवाल पूछा वो है, सवाल के ऊपर ये अगेन देखिए ना, देखिए दो- क्वेश्चन ये है सवाल कि ये if है- your lordships are to सवाल ये read है- into the Constitution, then that's a different question. The question is, 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं, वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई। If the framers of the Constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है। आर्टिकल आइटम 55 में इनलार्जमेंट का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई जुरिस्डिक्शन क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, इज दैट डूएबल? It's not और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और का भी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई है,
तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिसडिक्शन लार्ज सर वो कैसे फिर अपील आ गई? we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, एंट्री 55 में स्पेसिफिकली इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन डील करती है, तो वी विल नॉट गो टू एनी जनरल एंट्री, वील गो टू द स्पेसिफिक एंट्री फर्स्ट, which says that enlargement of jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी जी सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील मैं कंपटीशन कमीशन के चलिए लिए हसन साहब यू नॉट रियली आंसरिंग एनीथिंग, नो यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से, तो आप किसी और को दे देना, अब काफी हो गया ना, देखें 1 बज रहा है, अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, आपने 2 घंटे दे दिए हैं। सर मैं एक मिसाल देता